ओके। जिस जगह आपने जिस जगह का फिल्म बनाया है उससे मेरा घर केवल 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए ओके। हम इंसिडेंट से काफी वाकिफ हैं। और, और उस लोकेलिटीज का जो आपने हमें दर्शन करवाया इस फिल्म के जरिए, रियली अप्रिशिएबल। क्योंकि इस तरह की जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पब्लिकली इस चीज को उतना हाईलाइट्स नहीं कर पाता है आदमी। रिगार्डिंग दिस इशू, जो आपका यूरेनियम का जो डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये काफी वहाँ पे 20 इयर्स के आसपास चला। इसमें काफी सारा सोशल एक्टिविटीज लाइक मैथा पार्टिकल्स, ऑल दोस विजिटेड दैट प्लेस। लेकिन हम उस टाइम में वहाँ नहीं रहे, बिकॉज आई एम स्टिल इन दिल्ली। बट रियली यू हैव डन द अप्रिशिएबल वर्क फॉर द लोकल पीपल्स। और आपने इन चीज़ों का दर्शन कराया है, काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ के लोकल्स का जो नेचर के प्रति अपना डिवोशंस है, इसमें देखने को मिला है। रियली यू हैव डन द गुड जॉब। Thank you, थैंक sir. ओके। थैंक यू Thank you. यश। Okay. I think everybody just put the mic closer to your mouth. Hi. So, first of all, congratulations and thank you very much for bringing out this piece. It's very beautifully portrayed. But I do have one question. That is, ki, matlab, you have portrayed one thing that there is, corporate loot that is happening, and because of that, people's life and environment and nature, everything is getting destroyed. But what I see is that there is one aspect that is missing, which is the people struggle. ठीक है, मतलब, and if it is missing, it might be the case that people there are not able to protest, but that is mostly because there is a constant militarization that is happening in the nearby region on in that particular region. So you don't need to have active state repression, but you just need to have the presence of state forces there. Just for example, there is this Parsnath hill in Jharkhand, and around that hill, to suppress the movement against mining corporations, the state have built around multiple paramilitary camps around Giridih. So, is that something that you witnessed in that region? And maybe matlab, you might have missed it out. So, I was just wondering if you can comment on it. या पहली बात तो ये है, मैं चाहता था कि ये कहानी बहुत पर्सनल तरीके से कही जाए, जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो उनकी स्ट्रगल है, या फिर जो चीजें मैं लाइफ को क्लोजली अगर देख पाए, है ना, उनको समझ पाए ठीक से ना, तो उनके स्ट्रगल के साथ जो एसोसिएशन होता है वो you become a part of it, right? After a point when you watch them so closely. So I was avoiding the kind of outer conflict. So that's why you could not see the I some the body is so strong, the government is so powerful, or maybe industry or anybody comes there, they are so powerful. You are aware of it, you know about it, but there is a no option. You struggle. Yeah, there is a struggle happening. People wants to take out their voices, right? But these are not being heard. Or you have seen the small scene of somebody's broken house, and they say कि फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते हैं ना, if they cannot provide us job, right? So more of it was more of a personal story rather than a yes. Thank you. Thank you. There's a question at the back. Yeah. So, hi Shishir, I'm Abhay. So, I Yes, sir. appreciate that you have done a phenomenal job capturing the boredom and the kind of life the people in the villages actually go through. So, I have actually two questions. Both are related to the filmmaking and the cinematography of the film.
So first is that I have been like I'm from this community, and I have seen the Santhali, how the Santhali villages are captured, how the Santhali villages are. So the houses are painted very lively, and there's a lot of color. Even the clothes they wear, even the festivals they have, it is very colorful. So I have noticed that you have not ignored the color, but you have actually faded it out. I'm thinking, I'm guessing that it must be due to the grim and troublesome problems that the story is like the how the troubling narrative you are trying to capture. That's why you have taken this kind of color grading choice. But I still want to know what was the creative thought that went behind it. And the second is that I saw that the camera is mostly still at most, mostly the camera is still I would say 99% of the film. So was it because you lacked the technical equipments to just move it around, or is it because that you wanted to give the audience like a voyeuristic feel of you are looking into a personal lives of two people, and the people from that particular village? Because I would say that the film is a voyeuristic genre, voyeuristic medium of looking at people's life. But this felt like kind of when mostly at times when we are seeing through frames. So I had noticed that you used this kind of filmmaking, like frame within a frame, where we are watching those two interact uh, from behind those door frames, or you have kept the camera very distant. So was this a creative choice that you made, or was just because you lacked technical equipment to move the camera around that you had to go through this kind of filmmaking technique? Thank you. Yeah, That's a big yeah, question. yeah. मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, everything was a creative choice actually. The language, the cinema as a language evolves from the uh, which evolves from the resources you have actually. मैं तो चाहता था कि firstly I'll talk about the grading thing. I had only one lens. I जनरली क्या होते हैं फिल्म मेकर कहानियां लिखते हैं और उसके लिए बहुत बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है, बहुत पैसे चाहिए आपको फिल्म बनाने के लिए, ट्रुथ है ये। पर सिनेमा में बहुत नया फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, मतलब अप्रोच में एक लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं विद द लिमिटेशंस, with the so whatever the resources I had only one lens, and I knew I cannot, I knew the limitation of uh, those equipments, so I designed everything that way. Secondly, the actors were they are not actors, they are real people, they are living their life, and I cannot force them, or I only request or uh, make them comfortable, you know. It's very personal space. I have to respect that. I cannot encroach or uh, that way the looking them through the lens, a particular distance banaya, so it become a language of cinema. uh, so hearing, most of the experiences comes from a hearing. That's why there is a long static shot. You when you hear somebody's ना, किसी की कहानी आप सुनते हैं कहीं पे बैठकर, तो आप उनकी कहानियां कैसे सुनना पसंद करते हैं जनरली, है ना? तो कट्स जनरली, दैट्स द एवरीथिंग कम्स for a language or with the limitations and all the creative choices. So so hope I answered everything. Yeah, there's another question here. Hello. So first of all, I'd like to say it was a great experience watching the film. In the given time frame of an hour, 35 minutes, whatever's been captured is beautiful. There's a lot of despair as well, but it's been shown very beautifully. A lot of elements were covered. I'm someone who hails from Jharkhand as well, and the elements that were put together played out very well. There were these small bits and pieces that you notice while watching the film, as in the background noises as well. They fit perfectly with the
image that is put out. What I wanted you to take us along would be the songs used in the film. So, as we would know, there's an entire politics around folk songs. So there were songs that were representative of how the community prays or how they make an appeal to nature, there were songs which were also display of how their worldview takes shape or how their origin stories are. These are the so songs here becomes the channel for representation of these few things. But in the starting of the film, I think there is this one song which we could vaguely call a love song, which is both the husband and wife, they sing together. He makes an appeal to her to sing it with him. What I would like to know is this song something that you picked from the field? Was it something that they knew of? Was it something that you do from movies? Maybe that's something that I want to know. But thank you so much for a beautiful experience. Thank you. Thank you. Yeah, I'll try to explain it. Actually, the story has evolved very organically. मतलब I had not, मतलब मैं लिख करके कहानी वहाँ पे शूट नहीं किया. तो generally ये एक साल I was there for a year to make this film. और I spent lot of time with them. So I started understanding them kind of वो अपने तो कहानियां जैसे फोक स्टोरीज हैं या फिर उनके कल्चर का जो इवोल्यूशन का जो पार्ट है जो गाने हैं तो मोगली बास्की शी यूज्ड टू सिंग लॉट ऑफ सॉन्ग व्हाइल डूइंग वर्किंग और आई कुड फिगर आउट आई कुड सी कि शी नो लॉट ऑफ सॉन्ग्स तो सी मतलब वो लेकर के आई गाना फिल्मों में और तो फिर क्या होता था जनरली कि सीन क्योंकि हम स्टार्ट जो आगे की कहानियां हैं मुझे हमें भी नहीं पता होता तो इट्स कलेक्टिव एनर्जी टुगेदर कलेक्टिव एनर्जी है कि किसी चीज के बारे में हम कुछ फिल्म बनाने जा रहे हैं तो हम लोग एक तरह का ही फिल्म बनाएं वो एनर्जी का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था तो मैं उन सारी चीजों के बारे में जनरली बात करता था जो एक जो थोड़ी बहुत कहानियां फॉर्म हुई थी विद द कोर्स ऑफ अ टाइम आई यूज्ड टू टेक अलोंग विद दैट विद देम so it was a collective energies coming together. Hope I'm making मैं clear हो पा रहा हूँ. He's nodding. Yes, तो उस चीज के बारे में बात करना पहले देखता था despair में भी there is a love, there is a hope, there is a so there is a fun moment also when they talk about their daughter, missing child, they become very emotional, they used to hide something, you know. So kind of it came from spending time with them, listening to them, and I used to talk prior like 2-3 दिन पहले से बात करना उस बारे में बात करना और फिर वही they come with the kind of a song and everything kind of. Yes. That pretty much answers my question. I understand that all Yeah, of it's very difficult to actually, yeah. came organically is one thing that I got from it, which is again something very beautiful. So thank you. Thank you. There's a okay. 1 minute. There was a hand here. Then I'll come to you. Yeah. Hello. First of all, congratulations and really well made film. So my question would be regarding the logistics part and like as you told that you actually spent like almost a year there and actually figuring out how they work and you know how they basically do things. So for example, because I mean I think that you wouldn't be someone who would know their language, right? For example. Yes, I don't know the language. Then so basically how I mean in the very first year did you like basically how many months did you take to understand them and then like basically when did you start shooting and then how many you know when did you think so for example there was this scene when they like when we see a very long queue of people you know carrying their utensils and all and going through that road.
So how difficult was it to shoot that or tell people actually, because whole of the film is centered around two people, but that particular shot consists of many people, right? So was it like tough to actually get those people, like all these people in the movie? So yeah. Yes. तो फर्स्टली द लैंग्वेज प्रॉब्लम ना, वो वाला क्वेश्चन था ना. Yes, yes. तो व्हाट मैंने ना एक वर्कशॉप किया था क्यूबा में. मैं गया वहां पे, मुझे स्पेनिश नहीं आती थी. ये एक वर्कशॉप था 2016 में अब्बास किरोस्तामी के साथ. एक फिल्म मेकर है ईरानियन, काफी अच्छे फिल्म मेकर हैं, मैं काफी प्रभावित हूँ उनसे. तो मुझे वो चांस मिला तो मैं गया. मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी और वहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स को एक फिल्म बनानी थी. तो मैं बहुत इंट्यूटिवली, और ट्रांसलेटर बहुत कम थे, तो मैं काफी आई डोंट वांटेड टू स्पेंड वेस्ट लॉट ऑफ अ टाइम टू गेट द ट्रांसलेटर. तो और उससे पहले काफी विजुअली डायलॉग्स नहीं होते थे मेरे फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में. यूट्यूब पे आप देख सकते हैं एक दो फिल्में, ईस्ट विंड और ऐसे. तो फिल्म स्कूल से पढ़ाई की तो थोड़ा टेक्निकल, आई टू मच इनटू टेक्निकल about क्या film. तो it's then I realized that time in that workshop I realized uh, kind of connecting with the people. When you connect with, there is a soul in your film, then you realize that moment I realize it's beyond techniques or everything. It's very simple. It's तो क्या हुआ कि रियलाइज किया कि बहुत इंट्यूटिवली तरीके से ना, आई कुड एबल टू मेक 17-minute फिल्म देयर इन स्पेनिश लैंग्वेज विदाउट नोइंग द लैंग्वेज. एंड आई डिस्कवर्ड वेरी पावरफुल थिंग दैट पीरियड ऑफ अ टाइम. क्योंकि वो 12 दिनों का कोर्स था, तो आई कुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ अ टाइम. तो पर मैं इस प्रोसेस के साथ एक लंबा टाइम ना स्पेंड करना चाहता था. एंड देन फिगरिंग आउट how I could, then this was the moment I thought कि नहीं, this is the time I should make a film. क्योंकि और जो मैंने पहले से बोला, it's all about approach. I can make a different kind of films. अभी भी मतलब बना सकते हैं लोग, पर तो yes, this happened with the, this is extension of that film. वो तोयामो YouTube पे है, आप लोग देख सकते हैं. It's in a Spanish language. So it's extension of that film, that process which I experienced in Cuba. And the other part was like a lot of people coming, yeah, going through the village. It comes with the coordination. The logistic part is like you'll have to be very patient with this kind of film. Cinema is all about time. मतलब आप अगर जल्दबाजी में सब कुछ, if you are alone and uh, then you have to wait patient. तो वो एक महीने मुझे कोऑर्डिनेट करने में, जितराई हंसदा एक एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे, प्रोफेसर भी हैं, एनएसडी से पास आउट हैं वो. तो उनके साथ ही इज वेरी पॉपुलर देयर, पीपल नो, द विलेजर्स नो. तो ट्रस्ट फैक्टर आता है कि आप सडनली यू कैन नॉट गो. तो ही कोऑर्डिनेटेड विद अ पेशेंस ऑफ लाइक अ, इट टुक मी लाइक अ मंथ टू कन्विंस देम. एंड वो उस समय खेती का भी टाइम चल रहा था, तो देयर वाज अ कैसे, बट द लॉजिस्टिक पार्ट हैपेंस विद द, यू डोंट हैव टू रश, पेशेंटली अगर आप करिए तो वो हो जाता है. यस, होप आई आंसर्ड. Kind of trying to be a good सूत्रधार, थोड़ा managing. तो सबके चेहरे नहीं देख पा रहे हो आप. You can't see everyone's चेहरा. No, 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 no. Your voice. No, yeah. You can see my Yes, yes. चेहरा. Okay, and people can raise their hands, so you can see raised hands. Okay, so there's a question at the back and there's another question. Hanji, okay. Hi, I'm Sandhya. Sir, so I really appreciate your efforts in making this movie. So I'm nostalgic moment for me because my mom used to tell me all of these stories about growing up in villages, and how her life was, how you added all of those little elements, the mela, the fair that happens, how they're working in the fields, and how they're relishing
the natural environment. So that was everything that my mom told me. So I had this one question, where in between the initial part of the movie, you talk about the sarna part, where the people are talking about the sarna tradition, which Yes. is for the tribal people. And so I just wanted to ask you that, did you have any experiences? Right now, people like tribal people are fighting for the sarna code, and at the same time there are a lot of tribal people who have converted into a lot of other religions, mainly Christianity. And so here, there's a very pivotal role about the missionaries entering into these areas where tribal people are living. And it might have a positive effect also, but at the same time, the tribal people are losing their own tradition as well. So did you have any experience or any sort of insights from the people about this specific issue? Yes, definitely. I am from Bihar, और झारखंड बिहार पहले एक ही था. संथाली कम्युनिटी के बारे में मैं भी पहली बार जाना, मतलब दे आर सो क्लोज, मतलब है ना. तो ऐसा लगा कि इट्स मोर, एकदम ही नया नया ही सब कुछ लगा मुझे ना, कल्चर. और तो मैं खुद चाहता था कि कहानी मेरी ऐसी हो, मतलब मैं ऐसे बना सकूं कि उनके कल्चर को, उनके, जब तक आप किसी को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को, तो फिर एक बिलोंगिंगनेस नहीं आती है. हिस्ट्री जानना जरूरी होता है, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना. तो एक रिलेशनशिप शेयर करने के लिए एक, तो मैं चाहता था कि ये सारी चीजें जो खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, लैंग्वेज है जैसे, तो वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मैं फोक स्टोरीज पढ़कर जो भी मेरा जो मन किया ये फिल्म बनाने का, वो फोक स्टोरी से आया. फिर फोक स्टोरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, देन आई वेंट देयर एंड एक्सपीरियंस द सफरिंग, एंड इवन पर्सनली दैट अफेक्टेड मी वेरी मच. इनिशियली आई वो, मतलब मुझे लगा यार मैं पोइटिक कुछ क्रिएट कर दूंगा, है ना, कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स ऐसे, एक कहानी फिल्म बना लूंगा. बट slowly slowly na, even it changed me, it started affecting me. So uh, uh, the best part I discovered after making this film ki, uh, with this kind of cinema you can you can make a film also, at the same time you experience all life also. एक होता है ना, मतलब आप जब लाइव पेंटिंग करते हैं तो आप जाते हैं, जगह पे जाते हैं, वहां पे बैठकर पेंट करते हैं, तो साउंड, विजुअल और इंटरेक्ट करता है वो जगह ना आपसे. तो यस. Okay. Any more questions? There's one question. Okay, we're going to take two more questions, and then before the Habitat team tells us to get out, which Vasib is saying no, so that's okay. Yeah. Hi Shishir, Noyanika this side. It was a great film. Congratulations on that. I really like the way the delicate relationship was shown between a husband and a wife. I just had one question. The reference that you showed of tortoise and the tortoise under the earth, the little story in between, that was really nice. But was it consciously not being referred going forward in the film? Like we didn't see it anywhere in the film again. So was it done consciously, or I mean, did you want it to be open ended? No, it was more of a मेरा सब, मैंने ऐसे समझा कि इनका बिलीफ है, सिस्टम है कि टॉर्टोइज है धरती के अंदर. तो द फिल्म इज ऑल्सो अबाउट माइनिंग. तो मुझे लगा अगर माइनिंग, तो इट्स ऑल अबाउट डिगिंग, राइट, डिगिंग द अर्थ. तो विल दे हर्ट, मतलब काइंड ऑफ, if it's alive na. So that's how uh, it was there in the film. Got it. My next question was that you kept a very poetic format in the whole film, like through folklore, like
convey most of the information. So why did you keep it that way? Why didn't you keep it in a more conversational format? Was it again a creative leap? uh, I did not. It came subconsciously, kind of. I did not. I could have. It came. Matlab, I could not. In this, I was not. Whatever uh, came while shooting or spending time, na, I documented that little fictionalized it, है ना, बीच में कि it flow में ना एक yeah. So it was not. I do not think it's poetic or it's verbal or it's visual, or I just went with the flow, you know. Thank you so much. Hello. Yes. Mr. Shishir Jha. Yes. Johar. Johar. Is Vijay. Vijay Maji from Jharkhand. I am working in All India Institute of Medical Science, Delhi, from last 33 years. Wow. चाह रहा हूँ कि जो पिक्चर बनाई है आपने उसी कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, संथाल को. तो मैंने ईच एंड एवरी वर्ड्स जो भी कह रहे थे, आई वाज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ना वेरी इजीली बिकॉज एज कंपेयर टू अदर पीपल. तो मेरा सवाल ज्यादा नहीं है, बट जस्ट टू अप्रिशिएट यू, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो संथाल कम्युनिटी है वो अराउंड 7 करोड़ है हमारे जनसंख्या के मुताबिक से, और मैं उनके तरफ से आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने नोटिस करी कि माइथोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं कि हाउ दिस अर्थ हैज क्रिएटेड, जो टोटोज की बात करी थी ये लड़कियां, ठीक है ना, कि हमारे बिलीफ है, ऐसे हम समझते हैं कि जो धरती का जो क्रिएशन हुआ, हाउ इट इज क्रिएटेड, तो उस पार्ट को आपने दर्शाया वहां पे. दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि जो ट्राइबल में हमारे संथाल लोगों का ये कहना है कि जो माइग्रेशन वाला चीजें को आपने दिखाया, कहते हैं हमारे कि हमारी जो मूवमेंट हुई थी संथालों का, हमारा 7,000 ईयर्स हमारी हिस्ट्री है. तो जो झारखंड में जो हम आज एज ऑन टुडे वी आर लिविंग इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह, तो हमारी मूवमेंट जो हुई है वो हिहिड़ी पिपड़ी कोई जगह थी, या कहते चई गाड़ चंपा गाड़, वो हमारे संथालों में ये वो प्लेसेस है जहां से हमने मूवमेंट मतलब मूव किया था हमारे लोगों ने, मतलब 6,000 7,000 ईयर्स बैक की बात बता रहा हूँ. तो वो जो आपने अभी भी वो जो माइग्रेशन वाला जो चीजें दिखाने की कोशिश करी, इनफैक्ट ये हो भी रहा है हमारे यहाँ पे कि कैसे लोग बसाते हैं. आपने वहां पे एक पिक्चराइज किया कि वो कहता है कि मेरे ये दादाजी ने बनाया था ये मकान, और आज ड्यू टू सो मेनी थिंग्स जो सस्टेनेबल जो बातें हो रही कि हाउ जो बिग बिल्डर्स कह लो या इंडस्ट्रीज कह लो, कैसे वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन चीजों को. तो जहां लोग रह रहे थे हमारे कम्युनिटी के लोग, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड बाय द सो मेनी थिंग्स. वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं. तो ये जो माइग्रेशन वाला जो चीजें हैं वो आपने दिखाने की कोशिश करी वहां पे. और उस जेंटलमैन में जो आर्टिस्ट जो शो कर रहा था, उसने कहा कि बेशक गांव वाले चले जाए, बट आई विल स्टिल लिव इन दिस प्लेस बिकॉज आई लव द जो एरियाज है, जो नेचर है, जो बर्ड्स है, बट जो भी है चीजें. तो हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं, बट ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वट एवर हो, कि जो पलायन हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो बड़ा दर्दनाक चीज है. तो ये केवल जो मुसाबनी झारखंड की जो बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ मतलब इंटायर वो ओडिशा हो गया, लिटिल बिट ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार भी है. तो ये सारी चीजें आपने दर्शाया, तो मैं इसके लिए आपको थैंक्स कहूंगा. ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, मे बी आई एम द लास्ट पर्सन ऑफ दिस ऑडियंस हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन या अप्रिशिएटिंग यू. थैंक्स. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. Shishir, मैं- I think no more questions, right? Okay. So Shishir, last words from you. Any thought? Yeah, I want to say something. Yeah. Hello. You can speak. Yes. Yeah, I have written like I'm a great. I'll I'll read it out. I'm grateful to the Kriti Film Club and Achal ma'am and her team for their dedication in screening many important films.
and making them accessible to us. I'm also thankful to everyone who attended the screening, जो दूर दूर से आ रहे हैं अपना टाइम निकाल कर, as well as my team members, जगन्नाथ बास्की, मुगली बास्की, विनोद हंसदा, जितराय हंसदा, हमारे धीमान कमलाकर, प्रणीत, सारे लोगों को, प्रोड्यूसर हमारा मूवी, and my friend Susant and Aditya who has come to stand the screening there. Yes, Thank you ma'am. so much. So Shishir, just stay on. We'll take a photo with you and your friends on the Yeah. Zoom, but just do a thank you to the audience and things. So thank you everyone. आप लोग आए and you've stayed for the discussion. I think it's really an honor when an audience stays for the filmmakers discussion. So Shishir, you've done that with your debut film. I do want to say that a lot of what everybody said are my views also on the film. I just found कि ये film distant है और and yet इतनी पास है, बिल्कुल क्वाइट है, साइलेंट है और फिर भी इतनी आवाज है. एंड आई थिंक सिनेमा जो जिस तरह से कहानी कहती है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो फिल्म में दर्शा दी जाए वही फिल्म है. सो मेरे लिए ये फिल्म उस तरह से निकल के आई. एंड आई थिंक जब मैं इस तरह की फिल्में देखती हूँ जो फीचर्स होती हैं स्पेशली, या डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या फिक्शन भी होती हैं, जो लगता है लोगों को इतनी लंबी फिल्म है, पर वो लंबी नहीं है क्योंकि जिंदगी एक्चुअली लंबी है और हम तो मतलब थोड़े समय के लिए ही आए. तो इन फिल्मों को देखना और इन पे बात करना बहुत जरूरी है. यश आप प्लीज मेरा कंप्यूटर ऑन कर दो तो ऑफ हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस एंड इस तरह सिनेमा बनाते रहो. नीचे से ऑन करो बाबा. So ऐसी फिल्में बनाते रहो and follow you here. Please come back to our screenings. हम लोग ऑनलाइन भी एक छोटा सा पोर्टल चला रहे हैं called doclive.blogspot.com. वहाँ पे नाउ शोइंग सेक्शन है, वहाँ पे पूरे महीने फिल्में दिखाई जा रही हैं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक आर्काइव सेक्शन भी बनाएं जिसमें जो फिल्में हम दिखा चुके हैं उनको भी हम उन पे एक पेज पे रखें. एंड मई में जैसे मैंने कहा हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल में हमारी कुछ क्यूरेशंस होंगी, बट बाकी हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल की फिल्में बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं. तो आप जितनी फिल्में देखने आना चाहते हैं जरूर आइए. एंड थैंक यू. Or you want us to curate some film events, please get in touch with us and we'll be very happy to do that across the country, not just in Delhi. Yeah, thank you. Sushant, Thank you. you should Thank just you. stay on Okay. picture with you and Aditya and Sushant. Yeah, Shishir को ले आयो है ना वीडियो. शिशिर वीडियो ऑन कर दो ना.